Good morning once again. Now let's see another topic, a small topic, and with this we will finish this chapter, The Rise of Nationalism in Europe. Now this topic is about visualizing nation. When I say visualizing nation, मेरा मतलब है देश के लिए एक image create करना. Okay? See, it is easy to make portrait of a ruler or a king. बट हाउ टू गिव फेस टू द आइडिया ऑफ नेशन. आप एक राजा का पेंटिंग बना सकते हैं, क्वीन की पेंटिंग बना सकते हैं, बट हाउ डू यू मेक गिव फेस टू अ नेशन. ओके, सो बट वेन यू गिव फेस टू समथिंग लाइक नेशन, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. ओके, लोग नेशन क्या इमेजिन करते हैं? एक जोग्राफिकल यूनिट. पर लोगों को उस जोग्राफिकल यूनिट से जोड़ने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जोग्राफिकल इमेज हैज़ अ फेस. Now imagine if I'm your teacher, you will relate to me or I will relate to you only when we know each other's face. अगर आप सिर्फ मेरी एक आवाज़ सुनेंगे या अगर आप मुझे कभी भी नहीं देखेंगे, you will not have that personal connect with me. Same way, you keep telling people nation, nation, nation. Hey, what is nation? Not everybody is very educated. Not all people are philosophers to understand the idea of nation. कई लोगों के लिए नेशन इज़ एज बिग एज देयर ओन विलेज, क्योंकि वो उससे बाहर कभी गए नहीं है. सो दे डू नॉट नो हाउ बिग द फ्रांस इज़ और दे डू नॉट नो हाउ बिग द जर्मनी इज़. दे ओनली नो दैट दिस इज़ माई विलेज, इसके बाहर मैं कभी नहीं गया. हाउ डू यू टीच दैट पर्सन वॉट द स्टेट ऑफ फ्रांस इज़ और वॉट द जर्मन नेशन इज़. सो इन ऑर्डर टू डू दैट, उस समय के फिलोसफर्स ने क्या सोचा? that let us give a face to this idea of nation. So in 18th and 19th century, artists portrayed nation as a female figure. उन्होंने, जैसे आपने देखा भारत माता की एक फ़ोटो आप देखते हैं. अब ऐसा थोड़ा ना है कि कहीं पर किसी ने देखा है भारत माता. भारत तो एक जोग्राफिकल यूनिट है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, तो वो भारत माता की शक्ल कैसे आई? That was made so that people associate with the idea. And this female figure was made for European nations too. It was not any particular woman. It was just an attempt to give the idea of nation a physical form. Therefore, female figure became an allegory to the nation. Allegory का मतलब होता है जब आप किसी physical form को किसी idea के लिए use करते हो. जैसे कि आपने देखा होगा, यू सी लॉट ऑफ मूवीज़, इंसाफ की देवी जो खड़ी होती हैं, द स्टैचू ऑफ जस्टिस, शी ऑलवेज हैज़ हाथ के अंदर तराजू एंड आँखों पे पट्टी. ओके, दिस स्टैचू इज़ यूज टू रिप्रेजेंट जस्टिस. सो दैट इज़ जस्ट एन इमेज क्रिएटेड दैट दिस इज़ हाउ जस्टिस इज़. अंधा होता है कई बार, बट लोगों को इक्वल रखने की कोशिश करता है, सही तोलता है. Fine. So that is what an allegory is, that when you use a physical figure to convey an idea or to convey meaning to an idea. Fine. So ye allegory was used in European nations also to create an image for the nation. For example, France में it was done through an image called Marianne. I will show you who Marianne was. So as you can see here, this is the allegory of nation for France. This is what they created as Marianne. Okay, Marianne is a common French name. और उन्होंने ये औरत की एक शक्ल क्रिएट करी to make people understand that this is your nation. Okay, so Marianne had certain characteristics. What were those characteristics? That she wore a red cap, she had a tricolor flag. Marianne की statues were installed at every place in France, and her images were marked on coins too. As you can see here, this is a postage stamp on which Marianne's image is there. So this was done in order to make people understand the idea of France. Same way it was done for Germany too. For Germany, the name of the figure was Germania. Okay, from the nation Germany. As you can see, here is Germania. She's wearing the breastplate of German nation. She's carrying a flag again. She's wearing a crown of oak leaves. Oak leaves Germany में are considered as a symbol of heroism. बहादुरी का प्रतीक मानी जाती है. So she's wearing a crown of oak leaves. She's carrying a sword which has olive on it. Sword का मतलब है वो लड़ाई करने के लिए भी तैयार है, पर ऑलिव का मतलब ये है कि लड़ाई के साथ साथ उसको
पीस भी पसंद है, तो जो उसके साथ पीस से रहेगा वो पीस से रहेगी, और जो लड़ाई करेगा वो उसके साथ लड़ाई भी कर सकती है. दिस वॉज टू कन्वे दी इंटेंशंस ऑफ अ जर्मन स्टेट, कि हम बहुत बहादुर हैं और हम लड़ भी सकते हैं लेकिन हम पीस से भी रह सकते हैं. दिस इज सिमिलर टू हाउ भारत माता इज ऑल्सो projected. She's carrying tiranga, and she has that image. These images were created only and only so that people get an association with the idea of nation. Okay, so for France it was done through Mariana, and for Germany it was done through Germania. उसके अलावा there were other symbols which were used. For example, I told you rising sun की rays का मतलब है एक नए युग की शुरुआत. These broken chains means freedom. Then I told you sword with olive leaves means ready to fight but at the same time interested in peace also. तो जो हमारे साथ प्यार से रहेगा प्यार से रहेंगे, जो लड़ के रहेगा उससे हम लड़ भी सकते हैं. Then this is crown of oak. Here you can see this is crown of oaks. This was a symbol of heroism. Then this is a flag of revolution. This tricolor flag is of revolution. This was used in Germany. So this is a flag of revolution. This is a breastplate signifying German nation. So symbols were always used to convey different meanings. Fine. Allegory of nation was created so that people associate to an idea of nation. And as I told you, many symbols had many meanings. I explained those meanings also to you. So with this we finish our chapter. These last two topics were the only topics remaining. In case you have any doubt, you are always free to get back to me. Thank you so much.